अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं चैनल लेट्स लर्न विद समीउल्लाह। आज की जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, कैसी है और किस बुनियाद पे सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती है और कम होती है पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। हम जानते हैं कि सॉलिड्स में जो है ना, सॉलिड को तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है: कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। अब सबसे पहले कंडक्टर को पढ़ते हैं। कंडक्टर allows electric current to pass them easily, having it has conductivities of order 10 raised power 7 mho per meter and resistivity of order 10 raised power minus 7 ohm per meter. जैसे कि हम जानते हैं कंडक्टर से जो है ना इलेक्ट्रिक करंट बआसानी गुजरता है। इसकी वजह ये है कि उनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है और रेजिस्टिविटी बहुत कम है। रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से और कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इससे करंट आसानी से गुजर जाता है। इंसुलेटर्स जो है ना वो बिल्कुल अपोजिट है कंडक्टर के। अब हम लिखते हैं, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट to pass them easily because it has conductivity. अब इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ये होगी 10 raised power minus 20, conductivity of 10 raised power minus 20 mho per meter and resistivity 10 raised power 20 and resistivity 10 raised power 10 to 10 raised power 20 ohm meter. ये कंडक्टर इंसुलेटर का बिल्कुल अपोजिट है। थर्ड वन जो है ना वो है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स it allows some current to pass after specific temperature. After specific temperature, its conductivity varies between insulator and conductor और इसकी जो कंडक्टिविटी की जो रेंज है
कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो है 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻⁶ mho per meter. Respected all, thank you so much for watching. ये थी हमारे साथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड्स की, और जिसके फिर 3 सॉलिड्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर। इनके मुख्तलिफ फीचर्स हमने पढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।